55 टू ऑलमोस्ट 60 मार्क्स ले आएंगे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15-20 नंबर जो चाहिए आपको वो आप मैथ्स और रीजनिंग से कलेक्टिवली मिला के एटलीस्ट ले ही आएंगे। तो आज हम पूरा एक पेपर करने जा रहे हैं। इन दैट केस व्हेन यू आर कंफ्यूज यू कैन ऑलवेज सीक द हेल्प ऑफ द पैसेज इवन इफ यू एलिमिनेट 2 योर आंसर इज 1 and 3। ठीक है, अब तक हमारे सारे सही है। तो 90% एक्यूरेसी और ये आपको मिल जाएगी ये बुकलेट करोल बाग के या उन सब के वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पूरा एक पेपर करने जा रहे हैं विथ द स्ट्रैटेजी दैट हाउ यू कैन master the CSAT and you can achieve 90% of the accuracy without even reading the passage। ठीक है, तो you can save a lot of time and the time saved can be used in maths and reasoning so that आप 55 to almost 60 मार्क्स ले आएंगे सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15-20 नंबर जो चाहिए आपको वो आप मैथ्स और रीजनिंग से कलेक्टिवली मिला के एटलीस्ट ले ही आएंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुराना जो हमारा वीडियो था द लास्ट वीडियो whose link will be in the description, so please watch that also। we have discussed various golden rules there in a very relevant manner। however मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ golden rules। ये रूल्स की बुक्स आपको करोल बाग में मिल जाएगी, आपको वहां से आप देख सकते हैं। So what are our golden rules? Very quickly, eliminate all those statements based on the you have to follow GS knowledge। first thing you have to follow GS knowledge what you have studied। eliminate all those statements which are illogical, irrational, extreme, negative tone, negative perspective and narrow perspective। तो जो भी इरेशनल, इलॉजिकल हो, एक्सट्रीम हो, नेगेटिव हो, टोन का हो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव का हो, नैरो पर्सपेक्टिव का हो, उन्हें एलिमिनेट कीजिए। आंसर्स आपके ज़्यादातर किस टाइप के होते हैं? स्टेटमेंट जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव के होते हैं, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, फ्यूचर होते हैं एंड एज पर द जीएस नॉलेज जो करेक्ट लॉजिकली रैशनल होते हैं वो आपके आंसर्स होंगे। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में, आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है और एलिमिनेट करना है। अगर इफ यू आर कंफ्यूज इवन आफ्टर एलिमिनेटिंग देम देन रीड ओनली पैसेज व्हेन यू कैन नॉट कंक्लूड एन आंसर, और आप मिडिल ऑफ द पैसेज से पढ़े, लास्ट की 5-6 लाइन पढ़े, उसी से आपका मोस्टली हो जाएगा। until unless उससे नहीं हो रहा है तो पूरा पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विद दिस टेक्निक सॉल्व 4 to 5 years ऑफ पेपर एंड you'll achieve the desired accuracy of 90%। ऑलमोस्ट 55 to 60 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आज हम एक पेपर सॉल्व करके देख लेते हैं। So let's solve this। This is 2022 पेपर। This is 2022 पेपर जो अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सेट ए है, सेट ए। This question, unsustainability in production pattern is due to which of the following? Heavy dependence on fossil fuel, yes, if you will be heavy dependent on non-renewable energy, you will found unsustainability. Limited availability of resources, yes, if you have not constant and not assured availability of resources, then it will be unsustainable production. Expansion of recycling, recycling takes you towards sustainability, 3 are reduce, recycle and all. So 1 and 2 is the answer, 3 will be eliminated, 3 eliminate, 3 eliminate, 1 and 2 is the answer. Okay, pass to the next question। So ये मैंने this question I have taught you in the previous video, please watch there। According to the passage, deforestation and denudation will ultimately lead to which of the? ultimately deforestation denudation से ये होगा, क्या होगा? depletion of soil resource, yes होगा as per the GS environment knowledge। shortage of land for the common man, more the deforestation more the land is available to people, so it cannot be always said eliminated। lack of the water for cultivation, yes, because ultimately when deforestation will be there, denudation will be there, so there will be no vegetation to hold up the water, bind up the water and recharge the aquifers, and ultimately more runoff will be there and less availability of water, so it is convinced। yeah, agar even if you eliminate 2, your answer is 1 and 3। okay, the next question। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अबाउट
the it is about the GS Foundation course of BANO IAS, which is very good. It provides you GS classes, essay, CSAT, daily answer writing, personal mentorship. This is very important. Daily answer writing कहीं नहीं होता है, ये कहीं भी नहीं होता है. Current affairs, small size biases, interview guidance, and BANO IAS is situated near the Sukhdev Vihar metro, and उसके आसपास residence is very cheap, and it's almost 1/3 to the Karol Bagh or Mukherjee Nagar. So one can look for this, and the students were saying that the practice have made them writing speed improved. If they miss the classes to university, they can get the access to the lectures. First year students planning, they said they would handle you throughout the process. और बच्चों के अच्छे reviews है, and you can come down for demo classes and everything. Okay, so even the toppers have said commented rightly about this course. So let's get back. Okay. So it is saying we assume that in a democracy, any politician, any extreme word, ठीक है, all blanket is qualified to administer. We don't assume that anyone can, any politician can qualify to administer. So we don't assume that. नॉर्मली आप अज्यूम नहीं करते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बट आपको कभी नहीं लगा होगा हाँ ये देश का प्रधानमंत्री बन सकता है. ठीक है. पॉलिटिशियन शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो इट इज रेस्ट्रिक्टिंग यू, इट इज प्रोवाइडिंग योर सोल्यूशन, बट वी हैव डिस्कस आवर गोल्डन रूल, नैरो पर्सपेक्टिव, नैरो सोल्यूशन काइंड ऑफ, ओनली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेंड हो, ऐसा तो नहीं है भाई. तो not always. We need to devise a method bearing incompetence from public office. So public offices में जो incompetence आ रहा है उसको रोकने के लिए हमें कुछ चीज़ें devise करनी चाहिए. So this is providing a solution and it is not saying कि एक particular चीज़ ही. So ये थोड़ा सा convincing लग रहा है. As voters select their administrator, the eligibility of politician to administer a state cannot be questioned. क्योंकि वोटर सेलेक्ट करते हैं तो किसी पॉलिटिशियन जो बन गया तो उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसकी एबिलिटी की, वही तुमने ही तो चुना था. तो ऐसा नहीं है. इवन द पीपल इलेक्ट समबडी, दे कीप क्वेश्चनिंग देम इवन आफ्टर द पर्सन इज इलेक्टेड. सो दिस इज नॉट राइट. So C is the answer. Okay. Why not the methodology why is the methodology adopted in the poor debatable? तो काउंटिंग ऑफ द पुअर बेसिकली पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो उसके बारे में ये डिबेटेबल क्यों रहता है. आपने देखा होगा जीएस में कि हाँ पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करनी है, बेस्ड ऑन इनकम, बेस्ड ऑन अदर थिंग, सोशल फैक्टर्स एक्सेट्रा, कैलोरी, फूड, न्यूट्रिशन, जो भी डिबेट्स चलती रहती. देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड बी कंस्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन. देयर इज सम कंफ्यूजन. ओके, देयर इज सम कंफ्यूजन. देयर आर वाइड डाइवर्सिटी इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर्स. नॉट वेरी मच कन्विंसिंग कि इसकी वजह से डिबेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. डिफरेंट अर्बन रूरल की आती ही है ना पॉवर्टी लाइन. सो नॉट मच कन्विंसिंग टुवर्ड्स एलिमिनेटेड साइड, बट अभी रख लेते हैं. देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, मेजरिंग इनकम पॉवर्टी. सो यूनिफॉर्म इनकम पॉवर्टी की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ. ओके, कहीं पे अलग अलग है, यूनिफॉर्म नहीं है. लेट इट बी, लेट कीप इट. ओके, it is based on the proposition of poverty as merged income और buying capacity. ये सिर्फ उसी के बेसिस पे है कि सिर्फ इनकम या बाइंग कैपेसिटी क्या है उस इंसान की, उसी के बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड होती है, तो इसीलिए डिबेटेबल है, ऐसा बोलना चाह रहा है. तो ठीक है, इफ इवन इफ यू आर कंफ्यूज विच वन सीम्स मोर कन्विंसिंग, सी दिस इज नॉट कन्विंसिंग. नो ग्लोबल यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. Oh, there is no need to be having a global standard, right? So you can eliminate this. There is some confusion regarding what should be constitute the poverty line. Okay, A और D में थोड़ा बहुत confusion है. Let's see the statement. Even in that case, when you are confused, you can always seek the help of the passage. Okay, let's see the passage from somewhere middle. Poverty of a life in our view lies not merely in the impoverished state which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity by social constraint as well as personal circumstances.
So it is talking about that even the relevance of low income or possessions, other aspect of what is standardly seen as economic poverty, relate ultimately to their role in curtailing capabilities, the role in severe restricting the choices people have to lead variable. And so basically it's talking about that poverty ultimately should not be the criterion based on income and etc. and social constraint, personal circumstances, other it should be more broad, the calculation of poverty. So in in this sense, we can always, it is exclusively relies on the notion of poverty as insufficient income, or yeah, one can better characterize it by calling it income poverty. So the kind of poverty, the kind of calculation we do, it is more income poverty. Okay. So in that sense, the author is trying to say that it is based on the proposition of poverty as just as a income or the buying capacity. Okay, next question. So why income poverty only one measure of counting the poor? It talks only is an extreme, but however one kind of deprivation ignoring all other, as already we have seen in the passage also. Yes, income poverty only talks about one kind of deprivation, okay, which is buying capacity and all, money and all. So this is convincing so far. अभी देखते other deprivation in human life has nothing to do with lack of purchasing power. Other deprivations have to do, ठीक है, eliminated. Income poverty is not a permanent condition, it changes from time to time. Okay, not much convincing, but okay. Income poverty restrict human choices only at a point of time. Extreme, no. Even if you are young, even if you are old, income poverty will restrict human choices every time. Okay, income. So only at a point नहीं होता, तो शायद ये ठीक होता, but this should be eliminated. Now income poverty is not a permanent condition, it changes from time to time. It talks only one kind of deprivation ignoring all other. Which one seems to you more convincing? A seems to be more convincing about, as we have already seen in the passage. So there is no doubt in this. ठीक है. What does the author means by poverty of a life? So all deprivations in human life which stem not only from lack of income but lack of real opportunity. We have already seen in the passage also recently. Even though अगर आप ने passage नहीं भी पढ़ा तो भी it is more convincing till now. Let's see the other statements. Impoverished state of poor people in rural and urban. Poverty of a life से कोई लेना देना नहीं है rural urban उसका, ठीक है. Missed opportunity in diverse personal circumstances. No, okay. Material as well as non-material deprivation in human life which restrict human choices permanently. The word permanently has been used here. This is extreme statement, and deprivation doesn't restrict human choices permanently. ठीक है, restrict temporarily. ठीक है, दोनों में से देखोगे तो A is more convincing. Let's see another one. Development of agriculture technology is confined to developed countries. No, it is also into developing countries. Many technologies, है ना, पूसा decomposer, liquid nano urea, etc. genetically modified crops. Agriculture technology is not adapted. जब भी not, cannot, do not, such kind of extreme statements आए, you have to be cautious, and it is more or likely to be eliminated. Agriculture technology is not adapted in developing countries. No, they are adapted also in developing countries. So basically इसका आंसर होगा neither one nor two. ठीक है. Based on the following passage assumptions, let's take the assumptions. Poor countries need to bring change in their existing farming techniques. So yes, poor country, not only poor country, but every country need to bring their bring the changes in their existing farming techniques because of the we have to achieve the sustainable agricultural. Developed countries have better infrastructure. They might have better, yes. They waste less food, so
There is no study or no research which says that developed countries waste less food and developing are more. So this is extreme stereotype statement. This will be eliminated. 1 is your answer. Next. Okay. Growing enough food for future generation will be a challenge. Yes, will be a challenge. But it has not said कि it will be extreme challenge or will be the greatest challenge. तो थोड़ा extreme होता तो हम शायद eliminate करते. But it is saying normal thing as per the GS knowledge. So we'll take this. Corporate farming is a viable option for food security in poor countries. So see, poor countries, small farmers, marginal farmers, and corporate farming. So these both have a different ideology. Corporate is more profit seeking. So it cannot be a viable option. ठीक है? One only. Okay. According to the passage, etc., cannot be anticipated environment on the earth. A species not fully prepared to face the environment change that await them will face extinction. Yes, those are not fully prepared will face extinction. Maybe extinction in a year, maybe thousands of years or millions of years. Species will extinct. Right for now, all the existing species would get extinct. All extreme. यहाँ आ रहा है extreme. ठीक है. All including the human will get extinct. And their genome will not withstand biological mishaps. तो ऐसा नहीं है. Biological evolution will happen and people will adapt. Some people will adapt and some people will remain there. So this you can eliminate. If you eliminate 2, so what you get? 1, 3, 4. Inability of genome to withstand changes would result. Yes, it is talking the same thing which we have talked in first. So 1 and 3, extinction of species is a common feature. Yes, it's a common feature. You can see that almost IUCN reports वगैरह आप पढ़ते होंगे, nearly 90% of the species that ever existed they have already extinct. और अभी भी देख रहे होंगे तो काफ़ी सारी species extinction के words पे है और हजारों लाखों साल लग जाते हैं. But it is a common feature. 5 mass extinction आप सुन चुके हैं, 6वां आने वाला है climate change में, तो it is a common feature. So it passage Darwinian theory of evolution is not a theory at all. It does not satisfy the creationist doctrine. Creationist, basically it's about God. We don't know, maybe we cannot eliminate right now. Extinction is a function of environment and biological result. Yes, it is a function. There is no evidence to refute it. Okay, we don't know, we can eliminate or not. Existence of organism is attributed to a creator. This is very illogical. Okay, it cannot be said that all the organism has been created by God. So this will be for surely eliminated. However, you are confused, you can always go towards the passages when you are confused. Somewhere from the middle of the theory, not at all a theory, just somewhere is not a theory at all. Therefore, elegant, once again convincing, extinction is a function of biological assault and their inheritance deems ill-equipped. Therefore, so basically B is the answer. I hope you have got it from where we have got the B as the answer. Darwinian explanation is simple, elegant. Organisms go extinction as the function of. Therefore, this is not a theory at all. So B is the answer. Okay. Only species that have ability to overcome catastrophe, environmental catastrophe, will survive and perpetuate. Yes, if you are not have a ability, you will go extinct. More than 90% of the species on the earth are in the danger of getting extinction due to drastic changes. No, not more than. आप IUCN reports वगैरह या इधर उधर पढ़ते होंगे, तो not more than. ठीक है. Darwin's theory explains all the natural phenomena. Darwin theory cannot explain all the natural phenomena. It talks about survival of the fittest, biological evolution, etc. You eliminated 3. So basically, you have 1 as the answer. Okay. So people should be persuaded to continue with the mainly Indian traditional cereal-based diets. So why only Indian-based?
why only Indian traditional serial, that too serial based, है ना? So not very much convincing towards elimination side. ठीक है. India need to focus on developing agriculture productivity and capacity for more energy generation in the coming years. Okay, Shokesh, matlab we cannot eliminate. It is talking about right thing. Yes, we have to focus as per the GS. You cannot eliminate. Modern technology development result in changes of cultural and social behavior. Yes, the modern technology results in the changes. So cannot be eliminated. Water management practice in India need to change dramatically in the coming year. So dramatically is something focusing very overemphasize in the coming year. Okay. ऐसा ऐसा एलिमेट तो नहीं कर सकते कि एक्सट्रीम वर्ड यूज कर रहा है, ड्रामेटिकली बोल रहा है, एंड वी नो द वाटर क्राइसिस काइंड ऑफ थिंग इन इंडिया. So nothing much wrong as per the GS. So you are confused overall. So let's see the passage. Whenever you are confused, there is no shy having seeing in the passage. ठीक है. So somewhere middle, direct result of affluence has been changed in dietary pattern, energy consumption. People have moved to some higher product of which needs significantly more water to produce than cereal-based diets. Increasing use of electronics, electric and motor vehicle need more energy, and generation of energy requires water. So basically everything ultimately requires water. Henceforth, water management needs to be changed dramatically. So because उन्होंने वाटर पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि एनर्जी जनरेशन वगैरह इन सब के लिए भी तो वाटर ही चाहिए, तो वाटर मैनेजमेंट नीड्स टू चेंज ड्रामेटिकली. ठीक है. So next, passage based on the idea. Man should not work hard. No, ऐसा तो नहीं कह सकते man should not work. Great evil of our age is overstrain. Yes, maybe may not be. Greatest word use नहीं किया उसने, great use किया, तो you can keep this for now. Man cannot think well. No, man can think well. Some man can think well. Man cannot care for his extreme. देख रहे हो आप? Man cannot care for his spiritual welfare. It can care. Some man can care, some man cannot care. So B is the answer. Is not intellectually capable. Man does not seek self improvement. Not intellectually capable, ऐसा नहीं बोला जैसे. Man is intellectually capable. At least some man has no time to do so. Maybe, may not be, towards eliminated side. Is distracted by materialism. Maybe. Loves amusement and is mentally idle. So mentally idle is a bit towards extreme. So you may eliminate or may keep it in between types. ठीक है. So let's see, we are confused. We are not able to conclude. So we see the passage. Self improvement. Okay, found the self. He seeks no self improvement but entertainment, which would enable him to be mentally idle and forget his usual activities. So done. The answer is D. So let's see this. Country when demographic dividend has begun to operate, what will happen invariably? ये तो होगा ही होगा जब demographic dividend, you know India demographic dividend phase में चल रहा है. Number of illiterate people will decrease. This is extreme. That number of illiterate people will decrease. That too number, percentage नहीं. Percentage and numbers are different. Those, ठीक है. It cannot be said always right. You eliminate this. You eliminate ratio of very old and very young will decrease for a while. Yes, because the middle, because the working age population swells up in demographic dividend. So 2 is okay. Population growth rate will quickly stabilize. डेमोग्राफिक डिविडेंड से ऐसा नहीं है कि क्विकली स्टेबलाइज हो जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है. सो एक्सट्रीम है. जीएस के हिसाब से ये सॉल्व हो रहा है, ज़्यादातर सभी जीएस के हिसाब से सॉल्व हो रहे हैं. ठीक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाय द प्रेजेंट. मतलब नॉट पॉसिबल, अडल्ट्स प्रेजेंट से थ्रिल नहीं होते, मतलब कुछ भी बोल रहा है. ठीक है. देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई अडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट. सो
can be is a moderating word, पहली चीज. Yes, there can be more than one reasons why adults feel less thrilled by the present. So basically इससे ये पता लग गया statement में बात हो रही है adults are feeling less thrilled by the present. So you can keep this. Okay. The author does not know why adults feel less thrilled by the present. बात ही इतनी हो रही है तो author might know something. ठीक है. Does not. You can keep it, but I will eliminate it. But okay, for you, you can keep it. Adults have less capacity to feel the joy of loving or being loved. This is extreme statement. है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता. Not for all adults. Even though if you are confused, I would say कि this is more appropriate, but confused हो तो चलो, ठीक है. If present bring less thrill now, we grown up, perhaps because reason बता रहे. We have too much already, हमारे पास बहुत ज़्यादा. Perhaps because we have lost the fulfillment of giving and fulfillment of receiving. So basically more than one reasons. So basically what is our answer is B. चाहिए रह गया. So only an educated population can best make use of benefit of economic progress. मतलब बहुत extreme है. You should eliminate that. मतलब at least all economic development should be aimed at creation of leisure towards elimination, and increase in the educated population of country leads to an increase in happiness of its people. Cannot be said like US and other countries. Need not necessary education leads to happiness. Use of machine should be encouraged in order to create large leisured population. Machines का यूज़ होना चाहिए ताकि खूब आरामदायक ज़िंदगी जीने वाली भीड़ इंसान रहे. तो बहुत मज़ा नहीं आया, बट अब सब में ही मज़ा नहीं आ रहा है एक तरह से. ठीक है, तो देखते हैं कुछ है एक्स. फिर यहाँ पे पैसेज देखते हैं बीच से कहीं से. If a leisured population is to be happy, it must be educated, and must be educated with a view of enjoyment as well as direct usefulness of technical knowledge. So basically only an educated population can best make use of benefits of economic progress. Okay. So economic organizations, productivity of machine should lead to very good life of leisure, and much leisure is up to tedious work. But if a leisured population is to be happy, it must be educated. So only an educated population can best make. तो इस टाइप के एक आध क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, है ना, पूरे 27 क्वेश्चनों में. तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. So the same passage का extended. Author of the passage is against worrying too much about the past and future. अच्छा ये adults वालों का है. Worrying too much about past and future, being the habit of thinking about presents. Nobody has a habit of thinking about not being thrilled by new things. Giving and receiving joy only partially. No. Worrying too much about past and future, ये ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें इन्होंने बोली हैं, ठीक है, even if you see the passage again, the children's fear of are poignant, their miseries are acute, but they do not look forward and backward. Their joys are clear and complete because they have not yet learned always to add but to every proposition. Perhaps we are cautious, anxious, and skeptical. So basically it's all about we are worrying about all the things today, future, etc. ठीक है, worrying too much about past and future. So most of the people do not accumulate money for their need. No, most of the people try to accumulate money for their. Most of the people never fail to accumulate money. No, many people fail to accumulate money. मतलब आप जानती हैं, only concentration of wealth. Very few people have money. ठीक है. There are people who fail to accumulate money for needs. Yes, there are people. Okay, it's not going extreme.
So it is okay till now. There is no need to accumulate money. Extreme, there is a need. People should not be influenced by the opinions of other. Uh, yes, they should not be influenced by the opinion of other. They can take the advice, but karo apni man ki. Should not be much influenced, but okay, not very much convincing, but okay, showcase. People should accumulate as much as money as they can. No, this is talking about concentration of wealth against your DPSP, also against the ethical conducts. People should neither give up nor accept the opinions. No, extreme words कि कभी किसी से ओपिनियन लो ही मत, कभी किसी को दो ही मत. People will succeed in any undertaking if they do not accept any opinion at all. इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स कि कभी तभी सक्सीड होगे जब किसी से ना कोई ओपिनियन लोगे at all. So eliminated, best we have left with A. A is the answer for us. Conventions are the sources of rights of man. Yes, conventions are some of the among some of the sources of the rights of the man. Parampara, riti. So it is okay, showcase. Right of man can be exercised only when there is a social order. Extreme. ठीक है. And now because but you have to think also. अगर वो extreme बोल रहा है तो सोचो क्या अगर social order नहीं होगा, can you exercise your rights? सारी कॉन्स्टिट्यूशन, सारे फंडामेंटल राइट, अगर सोशल ऑर्डर ही नहीं है, क्योस मचा हुआ है, तो हो पाएगा? सोचोगे तो हाँ यार बात तो सही है कि राइट्स कैसे एक्सरसाइज करेंगे अगर इतना ही सोशल क्योस मचा रहेगा, सोशल ऑर्डर ही नहीं रहेगा. तो इट इज़ ओके. ठीक है, तो ओके टू नॉट टू एलिमिनेट, बट इफ़ यू आर कन्फ्यूज और हमने देखा कि हाँ 2-3 लाइन का पैसेज है, पढ़ भी सकते हैं. ठीक है, सोशल ऑर्डर इज अ सैक्रेड राइट विच इज द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट. इसने बोल दिया सोशल ऑर्डर इज नेसेसरी. ठीक है, तो सेकंड हो ही गया और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं. दे आर द सोर्सेज. यस, कन्वेंशंस आर सोर्सेज इवन दे डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, मस्ट देयरफॉर बी फाउंडेड ऑन कन्वेंशन. छोटा सा पैसेज से देख भी लिया. ठीक है, okay. 73. Which of the following best reflect the practical, rational, and lasting? Constructing huge concrete, negative environment, storage tank and canal across the country. पहले ही हटा दो इसको. Environmental concerns. Changing the cropping pattern and farming practice. कि क्रॉपिंग पैटर्न और फार्मिंग प्रैक्टिस चेंज करो. ठीक है, ओके. अभी हमें समस्या ही नहीं पता कि इशू क्या है, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है कि हाँ क्रॉपिंग पैटर्न, फार्मिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, ये और ये एक ही बात होती है. ठीक है, कि नेगेटिव. बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्यूफर्स. यहाँ पे रिचार्जिंग एक्यूफर्स एक बहुत काम की बात की है. बफर स्टॉकिंग थ्रू डैम्स मतलब डैम्स जो बने हुए हैं उनके उनसे बफर और बनाना, ताकि लास्ट में जाके जब पानी कम रहता है गर्मियों में तो यू कैन यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एक्सेट्रा, इंडस्ट्री वगैरह. अभी तक आपको इशू नहीं पता, बट मोर और लेस ये पता लग रहा है कि हाँ वाटर स्कैरसिटी या वाटर स्ट्रेस के ऊपर कुछ इशू है. ठीक है, नाउ यू आर कन्फ्यूज, इमीडिएटली यू कैन गो ईदर इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड. ठीक है, छोटा सा पैसेज है, मिडिल से उठाना है. This is an important point that we know India get too much water, 75% annual during June, September, and too little for remaining. The skewed water ability has to be managed and regulated for consumption throughout the year. ठीक है, तो throughout the year problems of floods and droughts can be addressed. तो basically throughout the year आपको वाटर चाहिए, तो सिर्फ सरफेस की बात नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर को भी आपको रिचार्ज करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे कहीं भी ढंग से अंडरग्राउंड वाटर की बात नहीं हुई है. रिचार्जिंग एक्यूफर, वेरी पॉजिटिव थिंग. बफर स्टॉकिंग ऑफ डैम्स ऑफ ऑलरेडी, तो दिस सीम्स मोर कन्विंसिंग. चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न फार्म, नैरो पर्सपेक्टिव, नैरो सोल्यूशन, इससे कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, इंटरलिंकिंग और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज एंड कैनाल, ये सब सरफेस वाटर को ही केटर कर पाते हैं और नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं इनके. तो डी इज मोर अप्रोप्रिएट. Author's assumption about scientific research, it is never very valuable. ये तो तुरंत एलिमिनेट होगा. ठीक है, नेगेटिव एंड ऑल्सो साइंटिफिक रिसर्च आर नेवर वेरी वैल्यूएबल. कुछ भी इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, मतलब समटाइम्स नॉट वेरी वैल्यूएबल. ओके, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू.
This seems more better statement than B. It is always very valuable. You cannot say that it is always very valuable. It is never without some value. ये थोड़ा सा more convincing लग रहा है मुझे. ठीक है. इफ आपको पैसेज पढ़ना है तो पैसेज भी पढ़ सकते हो उसमें, बट मिडिल ऑफ द बहुत स्ट्रेट उससे. ठीक है. अगर यू आर कन्फ्यूज कहीं से भी देख लो वैल्यू दिख रहा है. Chances the result may be value to the investigator of talent who can use the fact collected by him, inspired but industrial research at the basis of some fruitful. However, mechanical, unintelligent the labors of researcher, there is always a chance that result may be of value to the investigator of talent. So always it should be valuable. So basically it's never without some value. Kind of seems more convincing. Not many research result can be of value to an intelligent investigator. It has already said to an intelligent investigator, it is never without an value. So this is learned, and research result is always valuable to an intelligent investigator. Yes, वो बोल दिया. Any research result can be of value to an intelligent investigator. It is also convincing, but always the word always has been also used there. It is more convincing. Research must always be of some value to an. This is not. B is more appropriate as per the passage also. So we have done almost 27 questions. So let's check out the real answer key of UPSC कि हम कितना सही कर पाए. तो अब हम रियल आंसर की चेक करते हैं. So now let's check the answer key. ठीक है. तो इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा. सो 1 का हमने किया था, इसको हटाया था. 1 2 A, 1 is A. ठीक है. फिर हमने क्या किया था 2 का. लोन्स का ठीक था, क्लीन एनर्जी ये ठीक था, तो ये गलत था. B to 2 का B, 2 is B. ठीक है. फिर तब तक हमारे दोनों सही हुए. अकॉर्डिंग टू पैसेज डिफॉरेस्टेशन डेन्यूडेशन विल, हाँ शॉर्टेज ऑफ की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने एलिमेंट कर दिया था 2 को. तो 1 and 3, 3 का C, 3 का C. ठीक है. 3 का C, 3 का C आ गया आपका. फिर 11 which of the following best reflect message. हाँ, devise a method to bearing the incompetence. हमने किया था 11 का C, 11 का C है. ठीक है. 11 का C. ठीक है. और 12th मेथोडोलॉजी फॉर पुअर डिबेटेबल, हाँ क्योंकि ये सिर्फ इनकम पे ही, ये हमने किया था D. 12 का D, 12 का D है.
14th 13 टॉक, इट्स ओनली टॉक अबाउट वन डेप्रीवेशन। ये क्या था? 13 का ए है, आप देख सकते हैं 13A। 14 पॉवर्टी ऑफ लाइफ, ऑल डेप्रीवेशन, 14 का भी ए किया था हमने, 14 का ए है यहाँ पे। फिर इसका हमने नाइदर वन और नॉट टू, मतलब डी किया था बेसिकली। तो 21D, 21D 22 का हमने किया था बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या लेस फूड वाला वेस्ट है, उसको हमने काट दिया था। 21A किया था हमने, 22A, 22A। 23 का हमने कॉर्पोरेट फार्मिंग वाइबल नहीं है, ये हमने माना था कि पुअर कंट्रीज वगैरह इनफ चैलेंज होगा, तो 23B किया था हमने, 23A। अभी तक सारे सही हैं आपके। स्पीशीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, ऑल द एग्जिस्टिंग, ये एक्सट्रीम 2 हमने एलिमिनेट किया दिया था। 134, 31C, 31C है आपका। पैसेज सजेस्ट डार्विनियन थ्योरी, हाँ एक्सटेंशन एज अ फंक्शन, बी किया था हमने, 32B, 32B। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस हमारे ऑफिशियली आंसर की के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। जो हमने गोल्डन रूल्स लगाए हैं उसके बेसिस से कुछ जगह पे आपको इसकी मास्टरिंग करनी पड़ेगी, 3-4 साल के आप लगाएं आराम से, और इजीली, बहुत इजीली आप मतलब जो कि कंफ्यूजिंग वाले भी होते हैं ना, उसमें भी आपकी गट फीलिंग वही कहेगी और वही आंसर होगा। बट इसके लिए एटलीस्ट 3-4 साल के आपके लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो 33 मोर देन 90 डार्विन ऑल नेचुरल फिनोमेना, 3 को हटाया था हमने, 2 भी हमने हटाया। 31A, 33A, 33A। 34 पीपल शुड बी परसुएडेड, हाँ ड्रामेटिकली चेंज होनी चाहिए वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। 34D लगाया था हमने, सही है। तो अभी तक के सारे सही है। लेट्स सी अनदर वन, द पैसेज बेस्ड ऑन द आइडिया ग्रेट इवल, 41B, 41B, 41B। 42 does not seek fulfillment, loves amusement, 42D। 43 क्विकली स्टेबलाइज नहीं होगी, इलिटरेट नहीं घटेंगे, 2। 43B, 43B। डेमोग्राफिक डिविडेंड 44 में क्या लगाया था हमने? हाँ 44 हमसे मिस हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इट्स अ बेटर कंडीशन बट नॉट वेरी एसेंशियल कंडीशन, ठीक है, कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो वो इंश्योर कर ही देगा कि तुम रैपिडली इंक्रीज हो जाओ। प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एज एसेंशियल कंडीशन फॉर अ ग्रोथ फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। Promotion of higher education is an essential condition for country for its rapid economic growth. Okay. So promotion of higher education essential condition है, ऐसा ज़रूरी नहीं कहा जा सकता कि essential condition ही है, ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं कर, अगर आपकी जो इकॉनमी है मोर टर्शरी सेक्टर पे अगर बिल्कुल है तो ये ज़्यादा कहेगा। बट अगर आपकी इकॉनमी हो सकता है कि मतलब एक टाइम था जब टर्शरी सेक्टर इतना नहीं था, सर्विस सेक्टर फिर भी इकोनॉमिकली रैपिडली ग्रोथ होती थी मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी सेक्टर से एक्सेट्रा, तो ये भी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो 44 का डी, 44D, ठीक है, 44D। 51 ओनली एजुकेटेड वाला था, 51A, 51A। स्टेटमेंट्स देयर कैन बी मोर रीजन, 52B, 52B। ऑथर पैसेज इज अगेंस्ट वरिंग टू मच, 53A, 53A। most of the people, there are people who fails to fail, 61C, 61C, 62 opinion influence, हाँ people should not be influenced by the 62A, 62A defense conventions, हाँ ये दोनों सही थे। 63C, 63C, ठीक है, अब तक हमारे सारे सही है।
बस author assumption about scientific research, it is never without some value. 71C, 71C, 72 any research result can be always 72B था, 72C. ओके एक हमारा गलत हुआ यहाँ पे. 73 which of the following best reflect the practical rationale. 73D, 73D. So basically फाइनल आउटकम जो आपका निकला है इसमें तो फाइनल आउटकम, तो फाइनली हमने ये देखा कि 27 में से आपके 26 सही निकल गए, एक गलत था. यू कैन डू द मैथ्स एंड यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 2.5 और आप देखेंगे कहीं ना कहीं 55 60 प्लस भी चला जाता है. तो इफ सपोज आप इसको करते हैं 27 इंटू 2.5 कितना होगा. अगर मान भी लेते कि आप 26 आपके सही है तो कितना हो जाता है ये 52 एंड 13 65 माइनस समथिंग तो 65. तो वही मैंने कहा है कि 55 से 60 तो आ ही जाएंगे आपके, इससे प्लस भी जा सकता है द मोमेंट यू do practice well. And let me say something about this. तो 90% एक्यूरेसी, और ये आपको मिल जाएगी ये बुकलेट करोल बाग के या उन सब के वहाँ पे जाके इमेजिनर स्पार्कल और वगैरह वगैरह जो दुकानें वहाँ पे आप वहाँ पे मिल जाएगी आपको ये PDF. आप देख सकते हैं कि हमारे गोल्डन रूल्स वापस से ये है, इन्हीं का ध्यान रखना है. और इसके बेसिस से कुछ मैंने उसमें बुकलेट में डाल रखा है, सो यू कैन गो थ्रू विद द. बाकी जो भी है आपको जो भी इशू लगता है इस वीडियो के बाद भी तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं. और जो इससे पहले का एक वीडियो है तो उसको आप कमेंट्स सॉरी डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसको देख सकते हैं. बहुत छोटा सा वीडियो 20 मिनट्स का ओनली. ठीक है. सो बेसिकली आप यहाँ पे जाके ये CSAT का कोर्स है, इसको आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली. ओके ओके, थैंक यू फॉर joining us and we wish you a very best of luck. Please let us know how was this session. Thank you. Jai Hind.